वेलकम टू ASP अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। चलिए आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले बिगिनर्स लेवल 1 हमने किया था, अब हम लोग बात करते हैं बिगिनर्स लेवल 2। बिगिनर्स लेवल 2, लेवल 2 में भी हम लोग सिंपल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यह सेट बनाया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आदत बना लेते हैं, तभी आप एक अच्छा स्पीकर इंग्लिश में बन सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए दो चीज़ें, अच्छा स्पीकर बनने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिसनिंग और दूसरा स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहां पर हम लोग दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसा आपने लेवल 1 में भी हमने आपको पूरा डिटेल्स बतलाया था, फर्स्ट पार्ट में आपको सुनना है और सेकंड पार्ट में आपको जवाब देना। ध्यान रहे आपका आंसर जो है हमारे आंसर से अलग हो सकता है। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और एक महीने में आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो बस अकेले रूम में चले जाइए और बिंदास होकर के इसे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। बिगिनर्स लेवल 2। Where are you right now? Right now, I am at my home. Why are you here? I am here because I live here. Where is your best friend now? My best friend may be at his home. How many friends have you? I have many friends. Have you a red pen? Now I have no red pen. Are you mad? No, I'm not mad. Is your friend mad? Yes, he is totally mad. Who is your favorite singer? Arijit Singh is my favorite singer. Where is your pen? My pen is in my bag. Where is your copy? My copy is on the table. How many hours are there in a day? There are 24 hours in a day. What is the time now? It is 6 o'clock. Is there any blackboard? No, there is no blackboard. Who is your ideal person and why? Mahatma Gandhi is my ideal person as he was the worshipper of non-violence. Where is the projector? There is no projector here. Who is beside you? My brother is beside me. Who is to your left? No one is to my left. Who is to your right? My brother is to my right. Is it January? No, it is not January. Is the door closed or open? The door is closed now. Is there any tube light? Yes, there are 2 tube lights here. Where are your footwears? My footwears are on the shoe rack. Is English difficult? Yes, it is a little difficult, but I love to learn it. Where are your colleagues? My colleagues may be in the office. Which is your favorite season? Winter is my favorite season. How many ceiling fans are there in the room? There are 2 ceiling fans in the room. Is there any AC in the room? No, there is no AC in the room. Who is the chief minister of our state? Miss Mamata Banerjee is the chief minister of our state. Now it is your turn. अब आपको अच्छे से क्वेश्चन सुनना है और जवाब आपका होना चाहिए। यही मेन पार्ट है। आप समझ गए कैसे जवाब देना है। अगर जरूरत पड़े तो पहले पार्ट को देख करके नोट डाउन कर लीजिए सारा आंसर, अपना आंसर लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑडियो के साथ अच्छे तरीके से सुनिए और जवाब दीजिए। Where are you right now?
Why are you here? Where is your best friend now? How many friends have you? Have you a red pen? Are you mad? Is your friend mad? Who is your favorite singer? Where is your pen? Where is your copy? How many hours are there in a day? What is the time now? Is there any blackboard? Who is your ideal person and why? Where is the projector? Who is beside you? Who is to your left? Who is to your right? Is it January? Is the door closed or open? Is there any tube light? Where are your footwears? Is English difficult? Where are your colleagues? Which is your favorite season? How many ceiling fans are there in the room? Is there any AC in the room? Who is the chief minister of our state? चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। एक महीने में अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।